So welcome back. This is lecture 5 of direct taxation, capital gains for AY 2023-24. And we are doing CMA intermediate June 2023 attempt classes. Okay. Chali. So we have already finished 4 lectures, right? And we are going to continue now. Right. So this is where we have to continue. Okay. So यहाँ हमको continue करना है. So let's start with illustration 6. Okay. Okay, so let's read this problem, illustration 6. Lucky has a house property acquired on 18/8/2009 for 6 lakhs. Okay, when did he buy the property? To previous year, 2009-2010. Okay, FY 2009-2010. For 6 lakhs, he used the house for his own residential purpose. Okay, right. Then in 2012, 18/8/2012, we incurred capital expenditure on reconstruction of the house. So in 2012-13, okay, he did some improvement, right? So he did improvement worth 3 lakhs. Okay. So what we have seen till now, purchased the property for 6 lakhs. Okay. Then he did some improvement, okay, of 3 lakhs. Okay. Improvement was done in 2012-13. Okay. And then in 15/5/2022, that is previous year 22-23, which is your previous year for the purpose of your exam. Okay. He bought office goods, inflammable, that is which can catch fire quickly. That is called as inflammable, like crackers and all that. They are inflammable goods. Okay. So he bought office goods which was inflammable worth 1 lakh. Okay. So in our current previous year, he brought some office goods which was inflammable worth 1 lakh at home. Why did he bring? Because he wanted to deliver it to a party staying near his home. So on that day at night, accidental fire took place. And the fire damaged the whole house property. Furniture worth 5 lakhs. Okay. It damaged whole house property, furniture worth 5 lakhs, and business stock. Okay. Which business stock? This 1 lakh business stock, which he had brought. This was also destroyed, but at the same time, his entire house property was destroyed, and then furniture worth 5 lakh was destroyed. Okay. So all these things were destroyed. This is an insurance compensation problem. Okay. So now, insurance claim received on 18/8/2022. When did the fire took place? On 15/5/2022. May 2022, fire took place and he got compensation on August 2022. Fine. So in the same year, he got compensation. Then next is one for the house, 1 lakh. So how much compensation he got for the house? 1 lakh in cash, and a new house FMV was 44 lakhs. So he got on the same date. Okay. The same date, 18/8/22, he got 1 lakh cash, 44 lakh worth of house. So total how much he got? 45 lakhs. Okay. The total compensation, how we are going to see? We'll have to add this compensation in cash plus FMV of the house. Okay. Which they have given. This is the new house FMV. Okay. Fair market value. So here what you have got is compensation received is 45 lakhs. Okay. Next is for furniture, 2 lakhs. Okay. For household furniture, he got 2 lakhs compensation. But remember that furniture is a personal effect. So you will not compute
taxation for furniture, whether it is a loss or profit. Okay, it is not liable to capital gains, right? So personal effect is not a capital asset. So you don't have to do anything for furniture. Insurance claim received was 2 lakhs. And how much was the furniture value? That's given here. Okay. Furniture worth 5 lakhs. Okay. So the furniture which was destroyed was actually cost was 5 lakhs. Okay. 5 lakhs furniture was destroyed. And how much compensation, insurance compensation he got? 2 lakhs. Okay. Whatever it is a personal effect. So you will not bring it to tax. Okay. So whatever is the loss or profit, it's capital loss or, it's a capital income, okay, which is not taxable. Whether it is income or loss, here there is a loss because for 5 lakhs furniture, you got only 2 lakhs. But we don't have to do anything for that. Okay, it's a personal effect. You will not bring it to tax. Fine. So point 2 is not useful. Last point is for stock 80,000. You've got insurance claim for stock 80,000. So stock, if you sell stock, what arises? PGBP arises. Okay. So if stock is destroyed, amount which you have received, okay, again the profit will be PGBP. Okay. Stock was worth 1 lakh, we know that. And here you have received 80,000. So 20,000 is the loss, which is PGBP loss. You can set it off in your business income. Okay. So these two things are taken care of. So only thing we have to do is regarding the house. Okay. Only treatment is regarding the house. And in house, what we know is the consideration is 45 lakhs. Okay. 44 lakhs plus 1 lakh is the consideration. Fine. So there are no expenses on transfer given. Fine. So state tax treatment under capital gains. Okay. And one question they have asked in the end, how shall your answer differ if compensation is received on 15/4/2023? Now, when have they received the compensation? They have received the compensation. Okay. The insurance claim is received on 18/8/2022. So previous year 22/23. So they are saying that if compensation is received in previous year 23/24, 1 year later, what will be your answer? So we will discuss that later. First, let's discuss the capital gain. So we know for furniture, nothing is to be done. It's a personal effect. And for stock, business loss of 20,000. Okay. So 1 lakh is the cost. 80,000 is the money you have received in insurance. So minus 20,000, right? 20,000 is the loss. So main thing we have to calculate is for house. Okay. Fine. Okay. So let's see. Right. So now, okay. So here, as the damage is due to accidental fire, the case is governed by section 45, 1 capital A. So if you remember the section, well and good. You cannot remember, that is fine. Just solve the problem as per the procedure. Okay. You will get the marks. So as damage occurred due to accidental fire, case is governed under this section. Okay. So computation of capital gain for assessment year 23/24. Okay. So now first thing is, okay. So here you can see
1 minute. Okay, so we are first, so what are we trying to find out? For the house. Okay, for the house we are trying to find out the capital gain. Okay, so how do you find capital gain? First thing what we do is write sale consideration, which is your insurance consideration, 1 lakh plus 44 lakhs, which is 45 lakhs. There are no expenses on transfer given. Okay, so 0. So net sale consideration is your 45 lakhs. Okay, fine. This is very straightforward. So now after this, how will you find index cost of acquisition and improvement? Okay, so for this you will have to see what was the year of acquisition and improvement. Okay, so here, see, year of acquisition is 2009-10. Okay, 2009-10. And when was the asset sold or transferred? That is when you got insurance compensation. That is the year. So actually it is not the year when you are getting insurance compensation. In destruction cases, the event is destruction. So when did the destruction happen? That is your event. Okay, but here it's in the same year. You got destruction also happened in the same year. Compensation also is received in the same year. Okay, so it doesn't make a difference. But otherwise, remember that it is the year of destruction that is the year of transfer. Okay, not the year of receipt of compensation. Okay, so fine. So taxability is in the year of receipt of compensation. So you have to pay tax in the year of receipt, but your capital gains will be computed thinking that which is your year of transfer, the year of destruction. Okay, so 18/8/2009 is the year of acquisition. So 2009-10, correct? This is 2009-10, and the improvement was done in 12-13. So 9-10 and 12-13, we'll have to find the index for 9-10 and 12-13. So let's find the index for, here is your index for 9-10 and 12-13. Okay, so this is your 9-10, 148. Okay, and 12-13 is 200. Okay, 148 and 200, and 148 and 200. And what is the index for year of transfer? That is 2022-23. It is 331. Okay, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए. 331 you should just remember. Okay, so minimum you should remember is 331 and this 100. These two things, of course, you should have it by heart. Okay, but you will have all the index figures given. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ये वाला भी index figure आपको दिया होगा. That's not a problem, right? So ये कितना है? ये 9-10 is 148, 12-13 is 200. Okay, 148, 200, and year of transfer is 331. Okay, one minute. Yeah, this is the one, right? So here, 1 second. Okay, so here you can see cost of acquisition जो है आपका indexed cost of acquisition, it is 6 lakhs, which is the cost, into 331. Here index on year of transfer upon 148 is the index of the year. 141 जो है आपका, ये this is the index of the year of purchase. ठीक है, 148 is the index of the year of purchase. ठीक है, तो और फिर then index cost of improvement 3 lakhs was the improvement. Of course transfer यहाँ पे रहेगा 331 upon year of improvement का is 200. We had seen these both these indices. ठीक है, हमने अभी देखे थे. When you multiply this, you will get these two values. ठीक है, you can just try it in your calculator. So then add these two. Okay, once you add these two, you will get the total amount here. Okay,
ओके, सो यू आर गोइंग टू गेट द टोटल अमाउंट हियर. सो क्या करेंगे हम लोग? दिस इज आवर नेट सेल कंसिडरेशन 45 lakhs. Okay, minus total of index cost of acquisition and improvement, which is 18 lakhs. Difference of these two will be long term capital gain. ठीक है, so this answer will be थोड़ा सा different रहेगा आपके study material से. Okay, because in your study material the problem is for the previous assessment year. ठीक है, तो जो है previous assessment year का index रहेगा यहाँ 331 के जगह पे. Okay, you will have the previous year's index. ठीक है, which I think is 317. Okay, so बस ये चेंज रहेगा आपके इन योर स्टडी मटेरियल्स प्रॉब्लम. बट नाउ आपके एग्जाम में यू विल हैव प्रॉब्लम्स ऑफ करंट असेसमेंट ईयर, राइट, व्हिच इज 2023-24. सो इसीलिए दीज आर द करंट असेसमेंट ईयर प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा. ठीक है, फॉर फर्निश दिस इज योर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ये तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, राइट, बिकॉज वी परचेज्ड द हाउस मेनी इयर्स बैक. ओके, ठीक है, तो इसीलिए इट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. कब ये परचेज? इन 2009 and the transfer was in 2022-23. so easily long term capital gain. ठीक है, चलिए ये हो गया आपका. देन ओके, देन नेक्स्ट इज फर्नीचर. ठीक है, फिर हम बात करेंगे फर्नीचर की. ओके, सो ये पर्सनल इफेक्ट है, सो देयर विल बी नो कैपिटल गेन्स. ठीक है, बट देयर विल बी लॉस ऑन फर्नीचर which will be a capital receipt not liable to tax. ठीक है, बस. और then stock is a will give rise to a business profit or gain. ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ 20,000 कैसे आया? 1 lakh minus 80,000. ओके, that will be a PGBP loss, so it will be allowed as business loss. फाइन, ठीक है. अच्छा, लास्ट में एक ये हो गया हमारा, प्रॉब्लम हो गया. लास्ट में they asked us one thing. ओके, ये वाला पॉइंट है. How shall your answer differ if such compensation is received by the SSC on 15/4/2023? So मैंने आपको क्या बताया कि what is the event? Event is the destruction, year of destruction. तो यहाँ पे destruction कहाँ पे हुआ? It happened in May 22. Okay, so destruction happened in May 22. Fine, 15/5/22 को destruction हुआ. So again, capital gain, what we have computed, it will remain same. So you will compute capital gain for the year of destruction. The transfer has happened in the year of destruction, but you have to pay this tax only in the year when you are receiving the compensation. 5 साल के बाद अगर मिला आपको compensation, after 5 years you are getting the compensation, then you can तो क्या होगा? आपको सेम टैक्स रहेगा जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है. ट्रांसफर हैपेंड इन 22-23 ओनली, so it will be the same tax, but you have to pay after 5 years. If ठीक है, और वैसे ही आपको let us say ये हो रहा है, you are getting the compensation let us say after 8 years, so then same tax you have to pay after 8 years. Reason क्या है? Reason ये है कि when everything is destroyed, nothing is left, वो आदमी टैक्स भरेगा कैसे? You will have nothing left, right? So which is why in these cases, okay, you have to pay tax only when you get the compensation. Okay, चलिए, so ये हमारा, this is the answer to that. If compensation is received in 23, then the same capital gain what we calculated above, ठीक है, same capital gain, ठीक है, will be taxable कब? in the year of receipt of compensation. बस उतना ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं. कैपिटल गेन एवरीथिंग कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, it will remain same. Okay, ठीक है, so it will be taxable in the year of receipt of compensation. Okay, fine, बस इतना ही है, इतना ही चीज आपको याद रखना है. Okay, in terms of capital gain. Then okay, next
जो पॉइंट में हम जा रहे हैं, दैट इज कैपिटल गेन ऑन ULIP, विच इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. ULIP इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान. फाइन. तो इसमें क्या है, इन यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ओके, a person receives during any previous year amount under unit linked insurance policy और इंश्योरेंस प्लान भी बोलते हैं इसको, एक ही बात. ठीक है, ULIP. सो ठीक है, यू आर रिसीविंग एन यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, इफ यू टेक दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी में जो आपको वापस पैसे मिलते हैं, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ओके, ULIP इज exempt from tax. Okay, so that exemption is said to be exemption under section 1010D. ठीक है, तो 1010D का जो exemption है, ओके, तो ये exemption ये है कि whatever आप every year you will pay your premium, in the end you will get some amount, lump sum amount back, that is not taxable. ठीक है, unit linked insurance plan is exempt. But now एक अमेंडमेंट आया था लास्ट ईयर, ओके, विच आई टोल्ड यू, जिसने ये इसको भी अफेक्ट किया, आपके प्रोविडेंट फंड के टेबल को. करेक्ट. सो दैट हैज अफेक्टेड द ULIP आल्सो. ओके, तो इसमें क्या क्या था फर्स्ट. सो नाउ फर्स्टली क्या था, वट एवर अमाउंट यू गेट, इट वाज एग्जेम्प्ट. ओके, नाउ इफ यू पे प्रीमियम, ओके, अप टू 2,50,000. ठीक है, यू आर पेइंग प्रीमियम अप टू 2,50,000, जितना भी अमाउंट आपको मिलता है लमसम, ओके, लमसम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. ठीक है, बट इफ यू पे मोर देन 2,50,000, मान लीजिए एग्जांपल यू आर पेइंग 3 lakhs, सो वट एवर लमसम यू विल गेट, ठीक है, इसको मैं, you have to divide it into 2 part. Okay, one is 2,50,000 प्रीमियम जो हमने भरा है उसका कितना अमाउंट है. ओके, एंड सेकेंड विल बी फॉर द अदर 50,000. सो दिस 3 lakhs आप डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में. वन विल बी 2.5 lakhs, अनदर वन विल बी 50,000 और 0.5 lakhs. ठीक है, तो ये लमसम को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. हाउ मच, 2,50,000 के लिए और कितना 0.5 के लिए. सो 2,50,000 टू 2,50,000 और 2.5 lakhs का जो लमसम है ना, इसका जो इक्विवेलेंट लमसम है, दिस विल बी एग्जेम्प्ट एज बिफोर. ठीक है, लेकिन ये उसके ऊपर जो भी है आ रहा है, कैन बी 5 lakhs और बेस्ड ऑन हाउ मच प्रीमियम यू आर पेइंग. आप 4 लाख प्रीमियम भर रहे हो तो यहाँ पे 1.5 lakhs आएगा. ओके, सो बेस्ड ऑन हाउ मच प्रीमियम यू आर पेइंग. ठीक है, सो बेसिक पॉइंट इज गवर्नमेंट इज सेइंग, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 2.5 लाख के ऊपर प्रीमियम भर रहे हो, ऑर्डिनरी पर्सन विल नॉट पे दैट बिग अ प्रीमियम. ठीक है, मिडिल क्लास पर्सन, ओनली रिच पर्सन कैन पे प्रीमियम ऑफ 5 lakhs 10 lakhs. ओके, in that case government doesn't want to give exemption beyond 2.5 lakhs. So whatever lump sum you are getting for equivalent to this payment, यानी 0.5 lakhs पेमेंट जो आपने किए हैं फॉर सो मेनी इयर्स, इसका जो लमसम मिल रहा है आपको यहाँ पे, ओके, इसका इक्विवेलेंट लमसम ये टैक्सेबल. ठीक है, और कैसे कितना टैक्सेबल रहेगा एग्जैक्टली दैट विल बी मेंशन्ड इन द रूल्स. ठीक है, उसमें हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि आपको इसका कंप्यूटेशन नहीं है आपके कोर्स. ठीक है, आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए दिस 2,05,000 तक एग्जेम्प्ट है, ओवर 2,05,000 इट विल बी टैक्सेबल. ठीक है, सम विल बी कैलकुलेटेड एज पर द रूल्स. ठीक है, तो बस इतना ही चीज है इसमें आपको ध्यान में रखनी है. ओके, सो ट्रीटमेंट क्या है इसका, प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम रिसीट ऑफ सच अमाउंट चार्जेबल एज कैपिटल गेन्स. ठीक है, deemed as income of the previous year in which he received, and the income taxable will be calculated as prescribed. ठीक है, it will be calculated as prescribed. बस इतना ही आपको, इतना ही चीज आपको जानना है. ओके, you only have to, एक लिमिटेड पार्ट है आपको इसका. ठीक है, that you only need to know that about 2,50,000 का जो पार्ट है that is taxable. ठीक है, अबाउट 2,50,000 पार्ट का जो अमाउंट मिल रहा है लमसम, दैट इज टैक्सेबल. ठीक है, और वो लमसम में भी
2,50,000 का जो पार्ट के ऊपर जो आप दे रहे हो, ठीक है, सी वट एवर अमाउंट यू आर पेइंग इट इज आउट ऑफ योर टैक्सेबल इनकम। इन द एंड क्या टैक्स होगा, जो एक्सेस आपको मिल रहा है ओनली दैट विल बी टैक्स, ठीक है, टैक्स। सो वो रूल्स के हिसाब से दैट विल बी कंप्यूटेड, ओके, और वो टैक्स होगा, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें जानना है, कैपिटल गेन्स ऑन यूएलआईपी, ओके फाइन। ये हो गया हमारा कैपिटल गेन्स ऑन यूएलआईपी, ओके। चलिए सिंपल पार्ट है, ओनली थिंग इज आपको इतना मालूम रहना है। और अनदर थिंग इज इसका सेम एक ट्रीटमेंट सैलरीज में आता है, ओके, विच आई विल नॉट बी रिपीटिंग एट दिस स्टेज, ठीक है। मैंने कोई तो भी एक क्लास में आपको रिपीट बताया था ये चीज, आई थिंक इन द फर्स्ट क्लास आई हैड ऑलरेडी शोन यू सैलरीज में कहाँ पे ये आता है। अर्लियर जो आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, एनी अमाउंट विच यू रिसीव्ड ऑन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड वाज फुल्ली एग्जेम्प्ट, but now again if you are paying a premium about 2,50,000, so us part of premium which you are paying about 2,50,000, okay, whatever interest you are getting, okay, that will be taxable, ठीक है। so जो आप प्रीमियम जो भर रहे हैं वो दैट इज नॉट टैक्सेबल इन एनी केस। जो आप प्रीमियम, वो तो आपके टैक्स्ड इनकम के ऊपर से भर रहे हो ना, वो नहीं, ओनली द ग्रोथ विल बी टैक्सेबल, ओके। सो नाउ अभी ऐसा केस हो गया कि आपका, okay, statutory provident fund, it is also not fully exempt now, like before, okay, chali, then this is done. So now conversion of capital assets into stock in trade. Next what we are going to see is capital gains on conversion of capital assets into stock in trade, ठीक है। चलिए इसमें जो है पहले जो है earlier on when capital assets were converted into stock in trade, it was not treated as transfer, okay। कब, देखिए यहाँ पे लिखा है from AY 25-26 onwards, ठीक है, from AY 25-26 onwards such conversion is equals to transfer, ठीक है। so AY 27-26 sorry AY 1985-86 onwards, ठीक है, 1985-86 असेसमेंट ईयर ऑनवर्ड्स, इसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा 85-86 का 84-85। so what is the first date of 84-85? 1st April 1984, okay, so this provision has come only from 1st April 1984. Before 1st April 1984 this part was not taxable, ठीक है फाइन। सो चलिए, तो इस केस में कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है यार, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका सेल कंसिडरेशन क्या रहेगा, क्योंकि नाउ, ठीक है, यू आर कन्वर्टिंग कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, यू हैव नॉट सोल्ड इट येट, है ना, यू हैव नॉट सोल्ड इट येट, सो सेल कंसिडरेशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू। आपके पास तो रियल पैसा है ही नहीं ना, यू हैव नॉट सोल्ड इट एट ऑल, सो यू हैव टू टेक फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन। Cost, all cost related things, cost of acquisition, improvement, expenditure on transfer, whatever are the values, उसमें कोई difference नहीं, normal values you have to take, whatever values are there, ठीक है। Indexation benefit if available, ठीक है, till the year of conversion। क्यों till the year of conversion? After conversion that capital asset is not there, so you can get in indexation only till the year of conversion, ठीक है फाइन। so then taxable कब रहेगा, in the year in which stock is actually sold। so ये भी same like your insurance point, okay, I have just converted my capital asset into stock in trade, okay, so if I have just converted, I have not yet sold them, so it's not fair to tax me at that point of time, right? जब मैं बेचता हूँ मेरे पास पैसे आते हैं, only then if you tax it, that's the fair thing, है ना। so otherwise if I have done a huge conversion, okay, if I have done conversion of about let's say 20 crore worth of capital assets into stock in trade, ठीक है, अब वो 20 crore जो capital assets है, if I convert into stock in trade, if government now asks for tax on that, कितना बड़ा amount होगा, correct? So it's not prudent to expect tax at this stage, so you have,
इसमें भी आपको when you convert, right, जैसे वहां पे ऊपर बोला था मैंने आपको, when it is destroyed, the year of destruction is what you have to see, right? वो event of transfer. Similarly here, conversion is the event of transfer. Whenever you will sell it, say you sell it after 5 years, the same tax which have been calculated now, okay, that will be taxed at that point of time. कुछ भी change करने की जरूरत नहीं. Will calculate using this year when you convert it. Okay. Right. Then tax rate in all these cases, ऊपर वाले केस में भी, हर केस में, whenever it is taxable, okay, उस साल का रेट लगेगा. Okay, whatever rate is applicable for that assessment year, ठीक है, आपको टैक्स उस रेट से दिया जाएगा, बिकॉज दैट टाइम, उस वक्त में प्रीवियस असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट लागू नहीं है, तो एक ही टैक्स रेट लागू रहता है, whatever is there for that assessment year. So which is why all rules you have to follow which is there in that assessment. One of the rules is your tax rate. ठीक है, tax rate कौन सा लेंगे? Of that year when you are selling the asset. Okay, उस assessment year. Fine. चलिए, then last thing is यहाँ पे see actual sale value less FMV on the date of conversion is equals to business income. तो ये क्या है मैं बताता हूँ आपको. ठीक है, actual sale value, okay, minus FMV on the date of conversion. Okay, ये है actual sale value less fair market value on the date of conversion. ठीक है, ये है business income. ये हो जाता है आपका business income. ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ. ओके, तो सी ये ऐसा है, लेट अस से द ईयर 2002-2003. ओके, आई परचेस्ड कैपिटल एसेट. ओके, so I purchased it for 2 lakhs. Okay, now in, ठीक है, so let's put it like this. ठीक है, इसको यहाँ डाल देते हैं. For 2002-2003, okay, I purchased a capital asset for 2 lakhs. ठीक है, now in 2010-2011, okay, 2010-11, I am converting, okay, conversion into stock in trade. Okay, in this year what I am doing, I am converting this capital asset into stock in trade. Okay, I had bought it for 2 lakhs, and here now, okay, let me say market value or FMV, fair market value, एक ही चीज है. Okay, so market value in 2010-12 is 4.5 lakhs. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4.5 lakhs. ओके, फाइनली, ठीक है, ये जो स्टॉक जो मैंने कन्वर्ट किया है यहाँ पे, ओके, दिस आई विल सेल फाइनली. सो से आई एम सेलिंग दैट इन, अभी मैं बेच रहा हूँ इन अवर करंट असेसमेंट ईयर 2022-23, सॉरी, करंट प्रीवियस ईयर. ठीक है, सो नाउ 22-23 में आई एम सेलिंग दिस स्टॉक इन ट्रेड व्हिच आई हैड कन्वर्टेड. ठीक है, ओके, सेलिंग द स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है, ये आप बेच रहे हो. सो यहाँ पे 3 चीजें आ रही है. वन इज व्हेन यू परचेज कैपिटल एसेट, सेकंड इज व्हेन यू कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, थर्ड इज यू आर सेलिंग इट. ठीक है, जब सेलिंग इट तो आपके पास सेल्स वैल्यू होगा. ठीक है, तो एसपी बोल देता हूँ, सेलिंग प्राइस. ओके, यू आर सेलिंग इट लेट अस से फॉर 10 lakhs. ओके, तो यहाँ पे आपको कैसे क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू स्टॉक इन ट्रेड ईयर 2010-11 में यू हैव कन्वर्टेड टू स्टॉक इन ट्रेड, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन. हाउ? सेल्स वैल्यू विल बी दिस 4.5 lakhs. ठीक है, 4.5 lakhs आपका सेल्स वैल्यू रहेगा. व्हाट विल बी द कॉस्ट?
कॉस्ट विल बी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ दिस 2 lakhs, ठीक है। इसका इंडेक्सेशन करेंगे, टेक 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑन 2010-11 डिवाइड बाय इंडेक्स ऑन 23, इस तरह से इसका कॉस्ट आ जाएगा, तो एंड यू विल गेट कैपिटल गेन्स। ओके, समझ गया, ठीक है। ये प्रॉब्लम में हम देख लेंगे फिगर्स के साथ, तो इसीलिए मैं फिगर्स डाल के नहीं बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। ओके, सो ईयर, ओके, तो ये हो गया हमारा परचेज कैपिटल एसेट। तो ये 2 lakhs एफएमवी था ये, तो एफएमवी आप डाल देंगे, एफएमवी माइनस दिस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी एफएमवी, ठीक है, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल गेन, ठीक है। यहाँ आपको कैपिटल गेन मिल गई, राइट। नाउ इन 2022-23 आप बेच रहे हो फॉर 10 lakhs, so बिजनेस इनकम है। So in business income there is no indexation concept, ठीक है। इंडेक्सेशन वगैरह only in capital gains. So again your sale consideration will be this 10 lakhs जो आपको मिला है, ओके। यहाँ पे आप कॉस्ट क्या लेंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन में जो सेलिंग प्राइस है आपका, ये एफएमवी ऑफ 4.5 lakhs जो है ना, दिस विल बी योर कॉस्ट हियर, ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से माना जाएगा, दिस 2 इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस मानते हैं इसको और इसको, ठीक है। इस केस में जो है आपको जब टैक्स लग गया, ये एफएमवी माइनस इंडेक्स कॉस्ट का आपको आपने टैक्स भर चुके हो, ठीक है। तो इसीलिए अभी कोई टैक्स आप दोगे तो इट विल बी ओनली अबव योर एफएमवी, सो विच इज व्हाई ये एफएमवी, प्रीवियस एफएमवी जो है द डेट ऑफ कन्वर्शन, दैट विल बी योर कॉस्ट, ठीक है। सो क्या इसका कॉस्ट क्या माना जाएगा, कॉस्ट इज इक्वल, इंडेक्सेशन तो आप कर नहीं सकते बिकॉज इट्स बिजनेस इनकम, 4.5 lakhs इज द कॉस्ट, ठीक है, क्लियर। और जो आपका रिजल्टेंट आएगा 5.5 lakhs, दैट इज योर प्रॉफिट, पीजीबी, पीजीबीपी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 5.5 lakhs, ठीक है। इस तरह से किया जाता है, राइट। सो चलिए इस प्रॉब्लम को, एक प्रॉब्लम है इसमें आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें, ओके। सो वी आर गोइंग टू डू this problem now, illustration 7, okay। चलिए, so Ali has 10,000 shares of X Private Limited, okay। 10,000 shares of X Private Limited acquired on 15/5/1981, okay, for ₹12 each, ठीक है। On 15/7/1983 he converted 6,000 shares into stock in trade, 10,000 में से 6,000 shares was converted into stock in trade, okay। चलिए, and then on that date market value of share was 15 each, okay। Market value was 15 on this date of conversion on 1/5/2007, okay। Next transaction straight away after 83 is 1/5/2007, he converted another 2,000. He first converted 6,000 out of 10,000, 4,000 still are there as capital assets, correct। इसमें से he converted 2,000 into stock in trade, okay। और इस डेट में, that is 1/5/2007 में market value of share was 30 each, okay। Then last is on 17/2/2023, ठीक है। ये 2023 नहीं, this will be 2022, ठीक है, ये 2022 रहेगा, ओके। तो दिस इज, ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है, इज करेक्ट, दिस इज फरवरी दिया है, राइट। सो इसीलिए आपको ये है 2023, 17 फरवरी 2023 मीन्स प्रीवियस ईयर 22-23 जो आपका करंट प्रीवियस ईयर है, ओके। तो ये सब प्रॉब्लम्स में आप देख लेना इन योर study material, it is still solved based on your old assessment year, which is 2022-23, but you have to solve all problems for assessment year 2023-24 और previous year 2022-23, ठीक है। so हम पूरा उसी बेसिस में we are solving our problems, okay। चलिए, so on 17/2/23
he sold all shares at 225, सारे 10,000 शेयर्स बेच दिए. He sold all 10,000 shares. Brokerage 2%. Fine. State tax treatment. FMB on 1/4/2007 is 16. ठीक है, तो ये दे दिया उन्होंने. तो इसमें you just need to remember one thing, ये आपको बस याद रखना है, because otherwise there is no way you can remember it. ठीक है, unless someone tells you. ठीक है, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट थिंग जो है what he did, यहाँ पे if we see on 5/7/1983 he converted 6,000 shares into stock in trade. What is the date? 15/7/1983. ठीक है, okay. But conversion into stock in trade, conversion of capital asset into stock in trade, it came into picture only from 1/4/1984. okay, यहाँ पे हमने देखे थे ये चीज. ठीक है, here itself from assessment year, okay, 1985-86 onward. See, conversion of capital assets into stock in trade, ये आपका ट्रांसफर है. इट इज ट्रांसफर. ठीक है, only from assessment year 85-86. That is the first date will be for previous year to assessment year 85-86. That is 1/4/84. So from 1/4/84 only this is applicable. Before this, such conversion was not liable to tax. So आपको ये एक डेट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. Okay, 1/4/1984. So now in this problem, this date is before 1/4/1984. Correct? So इसीलिए first transaction जो है will not be liable to conversion of capital asset into stock in trade, will not be liable to tax. ठीक है, transaction हुआ है, stock in trade has been converted into your capital asset has been converted into stock in trade. ये तो हुआ तो है. Okay, so which is why for business income you will consider what? Fair market value ही आप consider करेंगे. ठीक है, जहाँ पे तीन चीजें हमने देखे थे. Okay, yeah. ठीक है, यार हमने तीन चीजें देखे थे. करेक्ट. वन वाज दिस वाज कैपिटल एसेट एंड दिस वाज फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. सो ये दिस वाज चार्जेबल टू टैक्स. ओके, इन दिस केस इट विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स. ठीक है, बट ट्रांजैक्शन हैज हैपेंड, कन्वर्शन. ये हुआ तो है, ये हुआ है, बट इट इज नॉट टैक्सेबल. सो विच इज व्हाई नाउ योर कॉस्ट बिकम्स योर फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, वो चीज हो गई जो पहले जो हुआ. नाउ दिस कॉस्ट विल बिकम फेयर मार्केट वैल्यू. दैट इज व्हेन यू सेल एज पीजीबीपी, आपको कॉस्ट में यू विल स्टिल टेक ये ही लेंगे. आप क्या लेंगे? यू विल टेक ओनली दिस वन, एफएमवी. ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो हुआ है, ये दिस हैज हैपेंड बट इट डिड नॉट गेट टैक्स्ड. सो एफएमवी 4.5 लाख सी व्हेन कैलकुलेटिंग बिजनेस इनकम, इसको हम कॉस्ट लेंगे. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. So now, चलिए अब आगे चलें. सो ठीक है, सो अब चलो इसमें नाउ देयर आर 3 कैटेगरीज इन ऑल. ओके, ए, बी और सी, ऐसा 3 कैटेगरी वी कैन स्प्लिट. हाउ? सबसे फर्स्ट थिंग इज द 10,000 शेयर्स. ठीक है, ये 10,000 शेयर्स जो है टोटल शेयर्स. आउट ऑफ दैट फर्स्ट कैटेगरी, एक कैटेगरी है ये आपका 6,000 शेयर्स. ओके, 6,000 शेयर्स इज वन कैटेगरी. ओके, सो इसमें क्या होगा? व्हेन यू कन्वर्ट इट, you will not have to there will be no tax for conversion. ठीक है, but there will be tax for PGBP. That is after converting in 83-84 he has converted, so no tax for conversion. But when he sold it eventually, यहाँ पे बताया हमको on 17/2/2023 he sold these shares. ठीक है, on for 2020 for 225 each. तो ये वाला जो शेयर, ये वाला जो बिजनेस प्रॉफिट इसमें लगेगा 6,000. ओके, बट कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड नहीं लगेगा. ओके, दिस इज वन कैटेगरी हो. दूसरा कैटेगरी क्या हुआ? विच ही हैज कन्वर्टेड, फिर कभी उसने कन्वर्ट किया. ठीक है, अलग अलग बार व्हाट ही इज कन्वर्टिंग, दोस आर द कैटेगरीज. ओके, सो देन नेक्स्ट जो है
1/5/2007 he further converted 2000, ठीक है. So ये this becomes the category 2. So ये जो 6000 है, this is category 1, okay, और ये 2000 is category 2, okay. So in this category 2 what has happened is when you convert it into stock in trade, that profit that will also be taxable, ठीक है, क्योंकि this is year 2007-8. So यहाँ पे तो वो rule लग गया था, rule was there. Conversion will be taxable, and then when he finally sells it, one moment, I'll just put on my charger. Okay, so तो सेकेंड वाला जो केस है इसमें यू दोनों टैक्स हमको लगेगा, बोथ टैक्स यू हैव टू पे. वन इज फॉर कन्वर्शन इनटू स्टॉक इन ट्रेड, सेकेंड विल बी व्हेन ही हैज सोल्ड द स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है. इन 2022-23 sold all the shares, okay, for 225 each. So दोनों both profits will be taxable. First one will be capital gain, second one will be PGB, okay, fine. Or what is the third thing? Third thing is, see, when he sold these shares on 17/2/2023, okay, so he had only converted this 6000, okay, he converted only this 6000 and he converted only this 2000. So he converted only 8000. So out of the original 10,000, he converted 8000 into stock in trade on different dates, okay. But 2000 has remained like that as a capital investment, okay. So this is the third category, yeah, 2000, okay. चलिए, so now we will solve this problem. इसका problem एक बार आपको समझ गया, then it will be very simple to solve it, ठीक है. चलिए, so let's see the solution. तो फर्स्ट वही है, 3 कैटेगरी रहेगा हमारा यहाँ पे, ओके. फर्स्ट कैटेगरी 6000 शेयर्स converted on 15/7/1983, okay. But section is applicable on or after 1/4/1984, so there is no tax on conversion into stock in trade, ठीक है, fine. So no tax on conversion into stock in trade, ये हो गया first. Now second is, ठीक है, 2000 shares were converted in 2007 next, okay, or it will be liable to tax in the year of actual sale, ठीक है. So ये सब में we know that for conversion of capital asset into stock in trade, when do you have to pay tax? You have to pay tax in the year of sale, ठीक है. But it is the event has occurred when you convert it into stock in trade. Tax will be calculated when you convert it into stock in trade, but you have to pay when the stock in trade is finally sold, okay. So such conversion shall be deemed to be transfer liable to tax in the year of actual sale, okay, fine. So चलिए फिर इसका तो ये हो गया. So it will be liable to transfer on the date of conversion, okay. यहाँ पे FMV on the date of conversion. So यहाँ पे FMV दिया हुआ है हमको प्रॉब्लम में on 1/4/2007, okay. That will be the sale value, okay. FMV will be taken as the same sale value, ठीक है. और FMV on 1/4/2001 will be cost of acquisition. क्यों? Why 1/4/2001 will be cost of acquisition? ठीक है, because okay, so हम we are talking about which transaction? हम बात कर रहे हैं, okay, we are talking about this transaction, okay. ये इसके ऊपर टैक्स कैसे लगेंगे? दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है. और सेकेंड वन कौन सा हमारा? सेकेंड वन. फर्स्ट वन में तो हमने बोल दिया कि दिस विल नॉट बी टैक्सेबल, ठीक है, ये टैक्सेबल नहीं. और सेकेंड केस में on 1/5/2007 में he converted 2000 shares into stock in trade. On that date market value was 30 each, so you got the market value. Sale consideration will be market value, okay. How now we have to find the cost of acquisition, which will be your indexed cost of acquisition,
So cost of acquisition basically is 12 each. ठीक है. So what is your actual cost of acquisition for 2000? 2000 into 12, which is 24,000 is the cost, only cost. Now how will we index it? Indexation में क्या करते हैं? Anything which is bought before 2001, 2002. Anything which is bought before 1/4/2002. ठीक है. हम क्या लेते हैं? Cost of purchase or FMV on 1/4/2001, whichever is more. Correct. तो इसीलिए यहाँ पे fair market value on 1/4/2001 पिक्चर में आता है. अगर वो इससे ज्यादा है, 12 से ज्यादा है तो. ठीक है. तो इसमें fair market value on 1/4/2001 is given in the problem. So this is 12. ये 12 है. Okay. Original cost and ठीक है. फेयर मार्केट वैल्यू आपको दिया है, दिस इज 16. ओके. ये 16. ओके. तो इसलिए हम फिर 16 यूज करेंगे फॉर इंडेक्सिंग. ठीक है. तो चलिए इतना करते हैं, कितने तो कंफ्यूजन होगा. ओके. तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक हम थे, ये हो गया. ठीक है. ओके. देन लास्ट विल बी वंस यू गेट दिस, फिर बाद में आपका जो पीजीबीपी इनकम, एक कैटेगरी बी ही एक कैटेगरी है विच इज देयर इन बोथ ऑफ दिस थिंग्स. ठीक है. जो आपके ये जो 2000 शेयर्स है, इट इज देयर, इट इज टैक्सेबल फॉर कन्वर्शन इनटू स्टॉक इन ट्रेड and it is taxable for PGBP also, both cases. Other two are taxable for only one thing. This 6,000 shares is not taxable for conversion into stock in trade, but is taxable for PGBP. And the 2,000 shares which remained as investment, okay, that is taxable only PGBP profit. PGBP is not there because you held it as your capital asset. So only capital gains is applicable. This is the only category where both tax is applicable. ठीक है. So actual sale value is 225. ठीक है. On and ये क्या रहेगा आपका? FMV on the date of conversion is 30. Okay. This will be, ये cost हो जाएगा आपका. This will become business income. Okay. चलिए. So ये हो गया. Then category C तो कुछ नहीं है. ठीक है. It remained as investments. So transfer shall be liable to capital gain. ठीक है. तो इसमें पूरा हम कैपिटल गेन का टैक्स लगाएंगे सीधा सीधा. ओके. नथिंग यू हैव टू डू. चलिए. सो नाउ लेट अस डू वन थिंग. ओके. हम लोग क्या करेंगे ना, लेट अस कंप्यूट द कैपिटल गेन्स. ठीक है. अब जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम, सो कंप्यूटेशन विल बी सिंपल फॉर यू. ठीक है. कंप्यूटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. सो यहाँ पे ठीक है, कैटेगरी बी को हम पहले देखते हैं. ठीक है. कैटेगरी बी हमारे पास क्या है? वी हैव गॉट 2000 शेयर्स. ठीक है. तो ये कैटेगरी जो है ना, आप अपना भी बना सकते हो. सो डोंट ज्यादा दिमाग हमको खर्चा नहीं करना है कि कैटेगरी बी कैसा बना, सीख. आप अपनी मर्जी, आप जो है. ठीक है. सो जस्ट तीन शेयर टाइप ऑफ शेयर्स जो है ना, और 3 ट्रांजेक्शन को जो सेपरेट इट एंड नेम इट वन कैटेगरी. तो यहाँ पे कैटेगरी बी, ठीक है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? वी हैव, सबसे पहले व्हाट इज द सेल कंसिडरेशन. कैटेगरी बी में पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ था? व्हेन इट वाज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है. इट वाज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड. सो क्या, कितना, व्हाट गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड? 2000 शेयर्स गॉट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड. व्हाट वाज द मार्केट वैल्यू? यहाँ पे हमको मालूम है, इट वाज 30. ठीक है. मार्केट वैल्यू वाज 30. 2000 into 30 is 60,000. Okay, this is your sale consideration. ये इस पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? यू डोंट हैव टू डू एनी इंडेक्सेशन एनीथिंग इन गेटिंग नेट सेल कंसिडरेशन. नो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर हैज बीन गिवन. नेट सेल कंसिडरेशन इज 60,000. ओके. ये आ गया हमारा नेट सेल कंसिडरेशन. ठीक है. अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे कैटेगरी बी का, क्योंकि कैटेगरी बी इज ओनली कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इसमें दोनों चीजें हैं, बाकी दोनों इजी हो जाएगा हमारे लिए. ओके. सो हियर, ठीक है. सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कैटेगरी बी? सो हियर हमने बोला था यू विल सी कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज मोर.
ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू जो इसका आया था हमारा, फेयर मार्केट वैल्यू वाज 16, ठीक है। यहाँ पे इफ यू सी, ठीक है, लास्ट सेंटेंस में दिया हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 वाज 16, ठीक है। तो इसको लेंगे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके। और व्हाट इज द सेल ईयर? सेल ईयर इज 2007-2008, ठीक है। सेल ईयर इज व्हाट? 2007-2008। सो कौन सा इंडेक्स ऊपर आएगा? इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ सेल, सो कन्वर्शन विल बी कंसिडर्ड एज सेल, राइट। so 2007-8 का इंडेक्स हमको चाहिए फॉर द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर विल बी फेयर मार्केट वैल्यू, अपना यू हैव टेकन फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, ठीक है। उसका रहेगा 100, डिनोमिनेटर इज 100। व्हाट इज 2007-8 का देख लेते हैं, ओके। सो 2007 and 8, ओके। यहाँ पे देखिए 2007 and 8 इज 129, ओके। ये हो गया आपका 129। सो पिक अप दिस 129, और ये तो है 100, so 129/100, this is how you will index it, okay। okay, so ये है so यहाँ पे we were doing this table, okay। okay, so here अभी हमको क्या करना था, ये 2000 into 16, ठीक है, दिस वाज द कॉस्ट। अब इसको इंडेक्स करेंगे इंटू 129/100, दिस इज व्हाट वी सॉ जस्ट नाउ, मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस। ये आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो 60,000 माइनस 41,280 गिव्स यू कैपिटल गेन। ये सारे आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, ओके। दिस ऑल आर योर, ठीक है, ये क्या है हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो शेयर्स वेयर विद हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके, ठीक है। सो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, समझ गया। तो ये पहले कैटेगरी बी का हमने कर दी। नाउ कैटेगरी सी क्या है? विच ही हैज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ओके। तो अगर इफ इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, देन व्हाट इज द सेल कंसिडरेशन? 2000 into 225 में बेचा है उसने इन 2022-23। so whatever he has sold in 2022-23, that has been sold as this, ठीक है, okay। it has been sold as sold at 2022-25, ठीक है, 225 में बेचा है उसने, जो भी है। ये कैटेगरी सी जो है ये आपका, ठीक है। तो ये क्या है? जो उसने इन्वेस्टमेंट में रखा है, इट इज दैट, ओके। सो 2000 into 225 will be the sale consideration he has got। 2% आपको दिया एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, ओके, ठीक है। सो हम यहाँ बात कर रहे हैं जो ये इन्वेस्टमेंट में जो 2000 शेयर्स बच गए थे, ओके। he converted 6000 and 2000, but another 2000 remained here, so we are talking about this as category C, ठीक है। तो इसमें इस यहाँ पे इन द एंड व्हाट ही सोल्ड इन 2022-23 प्रीवियस ईयर, he sold for 225, brokerage was 2%, ठीक है। इसको हम ले रहे हैं, और इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे हम निकालेंगे? कॉस्ट अगेन विल बी, इट वाज अक्वायर्ड ऑन 81 82, ठीक है। सो 12 और 16 विच एवर इज मोर, 16 मोर है, ये 16 आ जाएगा, विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। एंड इंडेक्सेशन क्या रहेगा इसका? ईयर ऑफ सेल इज 22-23, सो ऊपर आ जाएगा 331, इंडेक्स न्यूमरेटर इज 331, what is denominator? It will be 100, okay, ठीक है। we will take index of 2001-2, ठीक है। so ये क्या हो जाएगा हमारा?
चलिए कैटेगरी सी हम देख रहे थे. सो व्हाट आर वी सीइंग इज दिस. ठीक है, कैटेगरी सी यहाँ पे. ओके, सी 2000 into 225 is the sale value 4,50,000. 2% is brokerage minus 9,000 gives us 4,41,000 is the net sale consideration. कॉस्ट कैसे निकालेंगे इसका नाउ. दिस इज द कैपिटल एसेट, सो पूरा पूरा कैटेगरी सी इज कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल रहेगा. ठीक है, सो 2000 into 16, 16 is fair market value on 1/4 2001 2002. सो into 16 कर दिया और ये रहेगा इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर 331 अपॉन इंडेक्स ऑफ 2001 to 100. ठीक है, जैसे मैंने समझाया था. When you do this, you will get this. आंसर क्या रहेगा 4,41,000 माइनस 1,05,920. तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, ये होगा कैटेगरी सी. ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम. आपका क्या रह गया कैटेगरी ए. ठीक है, सो कैटेगरी ए में क्या होगा. ठीक है, लास्ट नेक्स्ट जो है. ठीक है, और कैटेगरी बी जो है यू नो दैट ये दोनों में कैटेगरी बी इज देयर इन बोथ. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया ना इट इज कैपिटल गेन. ओके, तो ये जो है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन हेड में जो बी में भी है कैपिटल गेन एंड सी इज ऑल्सो फुल्ली कैपिटल गेन. बट बी में जो कैपिटल गेन है ओके दैट इज कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है, इतना कैपिटल गेन आ गया हमारा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. ओके, बट देन व्हेन स्टॉक इन ट्रेड बिका है इन 2022-23 वी हैव सोल्ड द स्टॉक इन ट्रेड. ठीक है, सो दैट विल आल्सो गिव यू बिजनेस प्रॉफिट. ठीक है, और हमने उसमें क्या बोले थे व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस विल बी दिस सेल कंसिडरेशन, ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस. ठीक है, so 60,000 will become cost price. So चलिए अब next is we are computing PGBP now. ठीक है, तो ये है PGBP computation. okay तो इसमें now चलिए तो सबसे पहले हम ये कैटेगरी बी देख लेते हैं कि अभी हम कैटेगरी बी में थे राइट. सो विल फर्स्ट सी कैटेगरी बी. ओके, दिस इज अवर कैटेगरी बी. सो इसका पीजीबीपी कैसे निकलेगा. फर्स्ट take the consideration 2000 into 225. okay less 2% 9,000. नेट आपका आ गया 4,41,000 इसका भी. ठीक है, यहां तक बन गया आपका ना. कॉस्ट विल बी जो फेयर मार्केट वैल्यू था फॉर योर कन्वर्शन इनटू स्टॉक इन ट्रेड विच इज 30 into 2000 और 60,000. ठीक है, तो 441 minus 60,000 gives you ये आपका पीजीबीपी प्रॉफिट. ओके, व्हाट इज दिस. दिस इज योर पीजीबीपी प्रॉफिट. ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी ए में. ठीक है, तो इन कैटेगरी ए यू हैड नो कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. टैक्सेबल नहीं था उस वक्त राइट. सो बट इन द एंड ओनली पीजीबीपी इज टैक्सेबल. तो इसीलिए कैटेगरी ए में क्या होगा. ठीक है, दिस इज योर कैटेगरी ए right. So first your sale consideration will be 60,000 6,000 into 225. Okay, then expenses on transfer is 2%. So this minus this 13,50,000 minus 27,000 gives you net sale consideration. ठीक है, हमारा net sale consideration is 13,23,000. ठीक है, अब रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, ये पीजीबीपी है. तो हम कॉस्ट क्या लेंगे हमने बोले थे cost will always be the fair market value of conversion of capital asset into stock in trade. Although that was not taxable, but transaction तो हुआ था. Okay, so you will take cost of goods sold. You will take 15,000 into 6,000. ठीक है, तो 15,000 क्यों लिए हम. सॉरी 15 into 6,000. so ये 15 हम क्यों ले रहे हैं. ओके, 15 was the fair market value. ठीक है, ऑन द डेट ऑफ कन्वर्शन. कहाँ पे मैं बताता हूँ. ओके, 15 का ओरिजिन जो है
ओके। सो यहाँ पे ये बोले थे कि 6,000 shares being converted to stock in trade on this date. ओके, नहीं नहीं सर, ये तो सॉल्यूशन है एक प्रॉब्लम ऊपर। ओके, सो यहाँ पे है, ठीक है, ऑन 15/7/83 converted 6,000 shares into stock in trade on that date, market value was 15 each. ओके, सो उस डेट का जो मार्केट वैल्यू है वो लेना है इसका। ओके, ठीक है, तो ये 15 हमने लिए। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है लेकिन अच्छा प्रॉब्लम है, इट हैज कवर्ड ऑल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आप करके चले जाएंगे ना तो बिल्कुल आपका शेयर्स और कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ऑल कॉन्सेप्ट्स विल गेट क्लियर। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्या था ये, सो दिस इज हाउ आई जस्ट शोड यू ये 15 कहाँ से आया करके। ओके, 15 इंटू 6,000, दिस गिव्स अस 90,000। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वी विल जस्ट डू नेट सेल कंसिडरेशन माइनस दिस 90,000, दिस माइनस दिस गिव्स अस दिस। ठीक है, दिस इज पीजीबीपी प्रॉफिट। ये था ये प्रॉब्लम। ओके, फाइन। चलिए, नेक्स्ट पार्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। ठीक है, सो एसेट्स जिनका डेप्रिशिएट, जो डेप्रिशिएट होते हैं। ओके, और जिसका डेप्रिसिएशन आपको मिलता है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ओके, so you have already seen in PGBP that in PGBP whenever you have capital gain, जो depreciation वगैरह में you get the reference of capital gain, it is only short term capital gain or short term capital loss. Okay, so depreciable assets में long term नहीं होता, only short term होता है। Okay, so here capital gain in case of depreciation, in case of depreciable assets। ठीक है, so what is the meaning of this? Asset forms part of block of assets and depreciation is allowed under WDV method। Okay, so ये आपने देखा है ऑलरेडी पीजीबीपी में, करेक्ट, कैसे WDV मेथड से depreciation is calculated। Okay, अच्छा, और यहाँ पे it has to be a business asset, right? You have got a table of depreciation, so all those are for business assets, not for personal assets। Okay, so example, residential house property not used for business purpose। ठीक है, so this is a personal residential house property। ठीक है, तो जिस इसमें depreciation is not allowed because it is a personal asset, not a business asset, so it is called as non depreciable asset। ठीक है, so if the same house is used for residence of employee, it becomes a business asset and becomes a depreciable asset। okay, ठीक है, so capital gains on depreciable asset is always short term capital gain or short term capital loss। okay, then इसमें पीजीबीपी में हमने देखा है कुछ कभी इंडेक्सेशन करते थे पीजीबीपी में, did we ever do indexation? No, right? So no benefit of indexation। ठीक है, depreciable assets, no benefit of indexation। और computation तो you have already learnt in the PGBP chapter, so you can refer to it again if you want to। ठीक है, चलिए, next part is transfer of security by depository। ठीक है, so depositories क्या है? depositories वो है जहाँ पे your record of your shares, okay, is maintained। ठीक है, it is very similar to your ATM। ठीक है, हमारा ATM क्या होता है? ATM में आपके अकाउंट में, योर अकाउंट में इट शोज द बैलेंस, राइट? योर ATM कार्ड जो है इट शोज द बैलेंस, अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो जब आप ATM कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो, आप रियली आप कैश निकाल के गिन के देते हो क्या? नहीं, राइट? यू कैन डायरेक्टली डेबिट इट, इट कैन ऑल्सो गेट डायरेक्टली क्रेडिटेड। ठीक है, सो क्या हुआ ATM में जो डेबिट कार्ड जब आया, व्हाट हैपेंड?
योर कैश गॉट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक मनी, ठीक है, इट गॉट कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक मनी। सेम कॉन्सेप्ट ये है यहाँ पे, ओके। व्हेन योर शेयर्स में भी you have got physical share certificate, okay. When these physical share certificate, okay, are surrendered to the company, ठीक है, then आपको जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट मिलता है, which is called as डीमैट अकाउंट, ओके, ठीक है, इसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। सो इसमें क्या होता है, जैसे आपका एटीएम अकाउंट या डेबिट कार्ड जो है आपका, in that you have electronic money, here you have electronic shares. So your shares and everything regarding your shares, all details will be there in electronic form in that, ठीक है। So you can deal in it also. आपको अगर deal करना है कोई stock exchange में, you can directly deal using your demat account. You don't need physical shares, ठीक है। So depository वो जगह है, depository, जैसे ये एटीएम अकाउंट्स कौन मेंटेन करते हैं, बैंक मेंटेन करते हैं, राइट। बैंक मेंटेन्स योर एटीएम अकाउंट, राइट। सो द डीमैट अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय अ सिक्योरिटीज बैंक, जिसको बोला जाता है डेपोजिटरी, इज कॉल्ड एज डेपोजिटरी, ठीक है। तो दो मेन आप हमारे डेपोजिटरीज है, कॉल्ड एज एनएसडीएल, ठीक है, एंड सीडीएसएल, ठीक है। जैसे दो स्टॉक एक्सचेंजेस है, यू नो, राइट, टू मेन स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर हैविंग नेशन वाइड टर्मिनल्स। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत ही पुराना है, ओल्डेस्ट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बोथ ऑफ देम हैव देयर डिपॉजिटरीज, ठीक है। इसका डिपॉजिटरी इज एनएसडीएल एंड बीएससी का डिपॉजिटरी इज सीडीएसएल, ठीक है। चलिए, सो हियर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी, आपको इसकी सब जरूरत नहीं है, आई जस्ट गिव यू सम लिटिल बिट ऑफ आइडिया इफ यू डिडंट नो, ठीक है। you what you need is when you transfer a security through a depository, that is through your demat account, how will capital gain apply to it, ठीक है। क्यों ये हमको इसकी जरूरत थी, why we needed this, ठीक है। if you when you held here, यहाँ आपके पास जब when you had physical securities, okay, physical shares, okay, so you will have certificate, share certificate हो गए। तो आपको जो सपोज आपके पास ये बट डिफरेंट शेयर सर्टिफिकेट्स ए बी सी डी, ठीक है, डिफरेंट शेयर सर्टिफिकेट्स आपके पास है, आइदर ऑफ द सेम कंपनी और ऑफ डिफरेंट कंपनीज। मान लीजिए सेम कंपनीज के भी एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव परचेज, सो यू हैव गॉट डिफरेंट शेयर सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सो नाउ इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू सेल बी, ठीक है, सो आप बी को अलग से बेच सकते हैं, यू हैव गॉट अ सेपरेट सर्टिफिकेट, यू कैन सेल बी, ठीक है, सेपरेटली। ये तो हो गया आपका फिजिकल का। नाउ इन डीमैट अकाउंट, सपोज दिस इज अ डीमैट अकाउंट, these are electronic shares, you have purchased it of the same company, ठीक है, of the same company के बात कर रहे हैं। so you have purchased A on different date, B on different date, C and D on different dates, ठीक है। so purchase price, market value will also be different on different dates of purchase। सवाल ये है कि क्या आप इसमें भी चूज कर सकते हैं कि अभी आपको जो सी का जो लॉट है इसको बेचना है पहले आप, ओके। सो इफ दिस इज द वन यू वांट टू सेल फर्स्ट, क्या आप वो चूज कर सकते हैं डीमैट अकाउंट। फिजिकल में तो आपके हाथ में है ना, यू हैव ऑल डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, यू कैन चूज विच वन टू सेल। कैन यू चूज दैट इन डीमैट अकाउंट, दैट इज द क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू आंसर हियर, ठीक है। तो आप डीमैट अकाउंट में वो चॉइस नहीं कर सकते, ओके। सो ठीक है, सो इसमें वी विल सी सर्टेन पॉइंट्स, ठीक है। वन इज, ठीक है, एसएससी मे हैव सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल स्क्रिप्ट और डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। स्क्रिप्ट्स यानी एक ग्रुप ऑफ शेयर्स जो आपके पास है, दोज आर योर स्क्रिप्ट्स, ठीक है। बहुत लोग इसको स्क्रिप्ट समझते हैं, टी लगाते हैं लास्ट में, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट नहीं है वो, स्क्रिप्ट है, ओके, इट इज स्क्रिप्ट, ओके। सो securities held in dematerialized form shall be dealt under this section 45(2)(a), ठीक है। तो अभी जो ये सेक्शन हम देख रहे हैं ना, ये दिस इज फॉर डिमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, ओके। चलिए,
अब इसमें हम वी विल सी सम टर्म्स हियर, ओके। चलिए, फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी डिटरमाइंड ऑन फीफो बेसिस, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, मतलब आई बॉट 4 shares A B C D on different dates, okay. So when I sell, it will be on FIFO basis. So whichever I bought first, the oldest shares which I bought, that will be deemed to have been sold first, ठीक है। तो अगर मैं A B C D है, if it is in that order, A is the oldest share which I purchased, then I purchased B, then C, then D. When I sell it, automatically in demat account transaction, it will assume that you are selling A first, okay. तो FIFO basis में होता है। Period of holding also, जैसे आपका जो when you have purchased A, ठीक है, whatever is the date of purchase of A जो डीमैट में entered है, that will be the period of holding, ठीक है, राइट। वैसे ही B का C का, तो एक्चुअली इसमें FIFO बेसिस का कुछ नहीं है, और पीरियड ऑफ होल्डिंग, बिकॉज यू विल ऑलरेडी हैव डेट, ठीक है, डेट रहेगा डीमैट में एंट्री का, दैट विल बी योर, वो डेट के हिसाब से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा, ओके। देन ये जो बाकी सब सेम है कि डीमैट इट्स जस्ट एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, करेक्ट। जब हम पैसे में पेमेंट करते हैं किसी को, ओके, व्हेन वी पे इन मनी, वेदर यू पे इन मनी, यू पे बाय गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ठीक है, कुछ फर्क पड़ता है क्या आपको? आप कैसे भी पे करना है, आपको पे तो करना ही है उतना, राइट। सो यू, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल इन दीज टू। सिमिलरली ये शेयर्स का है, ओके, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल कुछ। सो सेल कंसिडरेशन, इंडेक्सेशन, एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर, कोई डिफरेंस, ऑल सेम, ओके। चलिए, तो यहाँ पे जो हम एक्चुअली वी केम टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज ऑफ द दिस सीबीडीटी सर्कुलर, ठीक है। ये एक सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर आया था, एंड इट टोल्ड हाउ टू डील विद डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। सिक्योरिटीज हेल्ड पार्टली इन फिजिकल फॉर्म एंड पार्टली इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। सो फीफो मेथड यूज करेंगे ओनली फॉर डीमटेरियलाइज्ड होल्डिंग, ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल फॉर्म है, यू कैन सेल, इट इज इन योर हैंड्स, राइट, यू कैन सेल द वे यू वांट। यानी अगर आपके पास मान लीजिए यू वांट टू, यू हैव 3 नेकलेसेस, आपको 3 नेकलेस है, वो बेचना है आपको, ठीक है। तीनों में से कौन सा आप पहला बेचेंगे, आपकी मर्जी है ना, योर व्यू, योर विश, विच वन यू वांट टू सेल फर्स्ट, करेक्ट। सो सेम इन केस ऑफ योर फिजिकल सिक्योरिटीज, आपके पास सर्टिफिकेट्स, आप सोचो, जो खरीदार आया है, यू सेल विच एवर यू वांट टू सेल। सो दिस सर्कुलर इज नॉट फॉर फिजिकल सिक्योरिटीज, ठीक है, बट फॉर डीमटेरियलाइज्ड वंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं मेन पॉइंट पे, ओके। सो इफ यू हैव गॉट मोर देन वन डीमैट अकाउंट, ये पॉसिबल है, यू कैन हैव वन डीमैट अकाउंट विद NSDL, वन विद CDSL, ठीक है, और भी है नेशन वाइड टर्मिनल्स, बट दीज टू आर द मेन डिपॉजिटरीज आपके, ठीक है, NSDL एंड CDSL। नाउ SSC may have more than one account in case of depository system, ठीक है, एक से ज्यादा अकाउंट यू कैन हैव इन डिफरेंट डिपॉजिटरीज, ठीक है। जैसे आपका ATM कार्ड है, अकाउंट आपके पास कई, जितने बैंक है वो बैंक के आप रख सकते हैं, राइट, यू कैन हैव मोर देन वन ATM कार्ड, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी है, ओके। सो नाउ व्हाट विल वी डू इफ आई हैव गॉट 2 अकाउंट्स, देन ये जो फीफो अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, विल कंबाइन बोथ एंड देन अप्लाई सेपरेटली, सेपरेटली, ठीक है। सो इफ यू हैव गॉट 2 डीमैट अकाउंट्स और मोर देन 2, ओके, व्हेन यू आर सेलिंग, आप एक ही अकाउंट से सेल करेंगे, राइट, यू आर सेलिंग शेयर्स ऑफ वन अकाउंट। सो whichever account जो आप यूज कर रहे हो to sell shares, okay, FIFO will be followed for only that demat account, okay. So for each account separately होगा, okay. अच्छा, for deciding demat account, ठीक है, deciding the FIFO date, date of entry, that is date of purchase, ठीक है। What you will see, there are 2 things, one will be your date of purchase of shares, okay. Second will be when you have converted your shares into डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो जब आप डीमटेरियलाइज्ड में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी डेट ऑफ एंट्री इन योर डीमैट अकाउंट। सो बिकॉज डीमैट अकाउंट में क्या इंपॉर्टेंट है, योर डेट ऑफ एंट्री,
ठीक है। तो डीमैट अकाउंट का ट्रांजैक्शन सब विल हैपन बेस्ड ऑन डेट ऑफ एंट्री इन डीमैट अकाउंट, नॉट डेट ऑफ परचेज रिटर्न इन द शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। So date of purchase is irrelevant. Fine. चलिए, so then कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, चलिए ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। ये डीमैट अकाउंट का बस ये पार्ट हो गया, सिंपल है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ओके, और कुछ भी नहीं है इसमें इन योर डीमैट अकाउंट थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओके, सो देर इज नथिंग इन दिस डीमैट अकाउंट, बट कुछ भी नहीं है, जस्ट रिमेंबर इफ यू हैव फिजिकल शेयर्स देन जस्ट सेल बेस्ड ऑन योर विल, जो बेचना है आप बेचिए, ठीक है। If you have different demat accounts, ठीक है, then of course you will choose ना which share you have to sell. So that share is held in which demat account? वो वाले demat से you will sell, ठीक है। So what you will sell? FIFO will apply, यानी जो आपने सबसे पहले खरीदे हैं automatically that you will sell, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अभी जो खरीदा मैंने महंगे में खरीदा, पहले मैंने सस्ते में खरीदा था, तो मैं अभी जो महंगे वाले में से मैं बेच देना चाहता हूँ अभी पहले, तो आप आपके हाथ में वो डिसीजन नहीं, यू कैन नॉट डू इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, ओके। डीमैट अकाउंट में आप वो डिसीजन नहीं ले सकते, the tool will automatically use FIFO basis, ओके। चलिए देन, ओके चलिए अब आगे चलेंगे। सो हियर हम नेक्स्ट पॉइंट ये कर रहे हैं, दैट इज ओवर नाउ, ये है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ पार्टनर और मेंबर टू फर्म एओपी और बीओआई एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी partner or member of a firm AOP BOI, okay, he is bringing some capital contribution, ठीक है, यानी आप एक पार्टनरशिप में ज्वाइन कर रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग सम कैपिटल, ठीक है। सो उसके बिल, यानी इफ यू आर ब्रिंगिंग सम कैपिटल, ठीक है, और वो कैपिटल लाते वक्त आप अगर कोई कैपिटल एसेट्स लेके आ रहे हो, ठीक है, राइट, सो दिस इज नॉट फॉर ब्रिंगिंग इन कैश, ये है आप कैपिटल एसेट्स लेके आ रहे हो, ओके। सो वेल कमिंग इन आप क्या कर रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग इन कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो ये माना जाएगा कि आपने कैपिटल एसेट्स फर्म को बेच दिया है और इस पे आपको कैपिटल गेन्स लगेगा, इट विल बी assumed that you are selling this to the firm, ठीक है। because income tax firm has a different entity, be it firm AOP और BOI, ठीक है, किसी हर तीनों में एप्लीकेबल है। so how you will you calculate capital gains on this, ठीक है, ये देखेंगे हम, okay। so one is it is treated as transfer as I told you, ठीक है। चलिए, so टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका, ये देखते हैं, ओके। सो वन इज सेल कंसिडरेशन, ठीक है, ये ध्यान से सुनना है आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज आप क्या करोगे, व्हाट इज योर सेल कंसिडरेशन, ओके। सेल कंसिडरेशन इज अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एओपी बीओआई एज वैल्यू, ठीक है। तो आपके एसेट का उस दिन क्या फेयर मार्केट वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं, ओके, या क्या उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है उससे कोई लेना देना नहीं, ओके, ठीक है। सो इसमें जो है आपको क्या करना है, वट एवर अमाउंट द फर्म इज राइटिंग इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट विल बी ट्रीटेड एज सेल कंसिडरेशन, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, ठीक है, ये सबके सब यूजुअल मीनिंग्स है, ओके। and when is it taxable, in the year of transfer, यानी when you have brought the capital contribution and given it to the firm, उस year, okay। indexation benefit is as usual you will get, क्योंकि वो आपका एसेट है ना, ठीक है। to be honest frankly speaking you might not have a written down value, ठीक है, अगर वो कोई पर्सनल एसेट है तो you will not have a written down value, okay। तो एक चीज याद रखना, if that personal asset is a personal effect, पर्सनल इफेक्ट अगर है तो फिर तो दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, पर्सनल इफेक्ट्स नॉट टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन अगर आपने फर्म के लिए यू आर गिविंग योर हाउस
हाउस इज नॉट अ पर्सनल इफेक्ट, ठीक है। तो हाउस जो है इट विल बी टैक्सेबल। आप जब वो ये माना जाएगा कि आप अपना घर बेच रहे हो फर्म को, दैट्स हाउ इट विल बी कंसिडर्ड, ओके। एंड देयर विल बी नो रिटर्न ऑन वैल्यू, क्योंकि बिजनेस एसेट नहीं है तो आप डिप्रिशिएट करोगे नहीं उसको, राइट। चलिए, ठीक है। बट इट इज पॉसिबल दैट आप एज अ सोल ट्रेडर अपने बिजनेस के एसेट्स को यू आर नाउ सेंडिंग टू फर्म जिसके आप पार्ट, दैट इज पॉसिबल, ओके। खैर, सो नाउ व्हाट वी आर कंसर्न्ड विथ नाउ इज ये है, ये सारे मेन चीजें हैं। एंड वन मोर पॉइंट इज एफएमबी इज इररिलेवेंट। सो सेल कंसिडरेशन इज व्हाटएवर द फर्म इज राइटिंग इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। बस वो चीज इंपॉर्टेंट। सो विल सी वन प्रॉब्लम ऑन दिस, क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट आपको, ओके। So ABC and company has three partners, A, B, and C, sharing profit or loss in the ratio of 5:3:2. Okay. Now they admitted D as a new partner. Okay. They admitted D as a new partner on 31/3/2022. Okay. For 1/5 share. Okay. ठीक है, तो उसको 1/5 शेयर उन लोग दे रहे हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग में, ओके। यार हम लोग अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको मतलब है सिर्फ कैपिटल गेन के पार्ट से, ठीक है। वी ओनली हैव टू वरी अबाउट कैपिटल गेन। चलिए, एंड डी इज टू ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल। सो डी इज टू ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल, ठीक है। 2 लाख कैपिटल लाने वाला है डी। एंड ही हैज ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर earlier used at his home 50,000 immediately. So he brought furniture on 31/3/2022, okay. And further brought jewelry of fair market value 2 lakhs on 2/4/2022, which was recorded in the books as 1,50,000. अभी तक हम यही बात कर रहे थे, okay. Compute capital gains in the hands of Mr. D. So this is what we were talking all this while. कि in this case, what will happen is fair market value of jewelry is 2 lakhs, ठीक है, but recorded in the books is 1,50,000. So sale consideration will be 1,50,000, ठीक है। इस केस में ये एक स्पेसिफिक चीज है जो you have to remember, okay. Sale consideration will be amount recorded in the books of accounts, which is 1,50,000, ठीक है। फर्नीचर लाया था उन्होंने, ओके, बट ये फर्नीचर वाज द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, ओके, दैट इज 2021-22 में लाया था, ओके, फर्नीचर, ओके। बट फर्नीचर इज अ पर्सनल इफेक्ट, सो ये 50,000 विल नॉट बी टैक्सेबल एनीवेज, ठीक है। ये नहीं, अगर ये टैक्सेबल होता 50,000, इट वुड हैव बीन टैक्सेबल इन फॉर प्रीवियस ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर 2022-23, ठीक है। क्योंकि दिस ज्वेलरी ओनली हैज बीन brought on 2/4/2022. So this is in 22-23 financial year 22-23, ठीक है। इसलिए 50,000 निकल गया, इसका कुछ करना ही नहीं, इट इज पर्सनल इफेक्ट्स, इट इज नॉट टैक्सेबल, ओके। सो दिस विल नॉट बी टैक्सेबल, बट दिस विल बी टैक्सेबल। ये 1,50,000 will be the sale consideration, or what will be the cost of acquisition, whatever cost D had acquired it for. He acquired it for 45,000 on 7/7/2001, ठीक है। सो 2001-2 में उसने लिया था 45,000 में, सो व्हाट विल बी द इंडेक्सेशन 100, 2001-2 इंडेक्सेशन इज 100, ओके। सो और व्हेन डिड ही सेल कब माना जाएगा, इन 2022-23, ठीक है। क्या है इसका इंडेक्सेशन, उनको मालूम है 331, ओके। सो व्हाट यू विल डू, 45,000 इंटू 331 अपॉन 100, ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, बस नहीं है, यू विल गेट कैपिटल गेन्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, हियर अक्वायर्ड इन 2001, सो क्वेश्चन ही नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, फाइन। चलिए, सो इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो यार
यही है जो हमने पहले देखे थे। टू एसेट्स वर ब्रॉट, फर्नीचर इज अ पर्सनल इफेक्ट नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। ज्वेलरी विल बी कंसिडर्ड, फाइन। और अब हम इसका कंप्यूटेशन देखेंगे, ओके फाइन। सो एक मिनट, ठीक है। ये कंप्यूटेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो यार ये लिख लेना है सब। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ डी ए बाय 2023-24 सेल कंसिडरेशन विल बी 1,50,000, नो एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 0, नेट सेल कंसिडरेशन इज 1,50,000, ओके। और लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 45,000 into 331/100, we had talked about this। तो इसका वैल्यू आता है 148,950, ठीक है। सो क्या रहेगा, 1,50,000 माइनस 148,950 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल से आंसर्स थोड़े आपके वेरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 317 यूज हुआ होगा फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23, बट वी आर सॉल्विंग based on assessment year 2023-24, which will be asked in your exam, okay। तो चलिए, तो ये क्या हो गया फिर, it will be 1,50,000 minus 1,48,950, so long term capital gain is this 1050, okay, ठीक है। चलिए, क्योंकि प्रॉब्लम वाज इजी, ओके। बस इतना ही था कि आपको you should know that कि when a partner is bringing in his capital contribution, okay, so your sale consideration will be whatever is recorded in the books of the firm, ठीक है, वही पॉइंट। अच्छा, इसके आगे ना ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे टू बी डन लेटर, ओके, ये जो है दिस इज एन अमेंडमेंट जो पिछले बार आया है, ठीक है। दिस बेसिकली नोटिफिकेशन, ओके, एक नोटिफिकेशन आया है, उसका ये अमेंडमेंट है, ओके। सो वी विल डू दिस एट द वेरी एंड, क्योंकि इसका कनेक्शन आपके बाकी पार्ट से नहीं है, ओके। सो जिस क्रम में हम चल रहे हैं उसी में हम आगे जाएंगे, ओके, गोइंग ऑन इन अ सीक्वेंस, सो विल डू दैट। और ये जो पार्ट है ना, दिस जस्ट रिकॉर्डेड इट हियर, ठीक है, ये हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये थियरी है, इट इज लाइक केस स्टडी टाइप है इसमें, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 3 केसेस आपको दिए गए हैं, सो वो दैट आई विल एक्सप्लेन एट द एंड, ठीक है। तो ये आपका एक अमेंडमेंट एक्चुअली, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर है, ये सर्कुलर के थ्रू ये एक्सप्लेनेशन दिया गया, ओके। तो ये करेंगे हम बाद में, ठीक है। सो हम अब कंटिन्यू करते हैं, ओके। चलिए, सो नेक्स्ट इज योर कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। चलिए, सो फ्रॉम हियर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो आई विल लेट यू नो व्हेन इज द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, सो थैंक यू। So we'll meet in the next session, right?